Okay, so up till now, you have understood whatever we have done as far as the synthesis of the protein through gene tech is concerned, the main steps. If we just go Yeah. and look at the every time, every time I'm teaching, I'm moving forward in these steps. I go back to the initial slide and I share with my students कि देखो, we were on stage 1. We obtained a copy of the gene from the DNA of the donor organism by any of the 3 ways that we've mentioned, either by pulling out the gene by the shotgun approach or by the Pulling out MR. mRNA or artificially synthesizing the DNA? Bilkul. Second stage, we placed the gene onto the vector because we need a vehicle which can carry the gene. Yeah, which is our plasmids. हाँ, third और fourth हमने नहीं किया है. To understand stage 2 ना हमें बहुत कुछ समझना पड़ा. हमें we needed to understand DNA polymerase, restriction enzymes, and then DNA ligase. और फिर हमें प्लाज्मिड्स के बारे में समझना पड़ा. हमें समझना पड़ा कि हम कैसे कट करेंगे उसको, कैसे ज्वाइन करेंगे, वो सब कुछ. Now let's do the 2 steps which are using the vector, ठीक है, to introduce the gene into the host cell. क्या मतलब इसका? कि we are using the vector, which is this, the plasmid, to introduce the gene into the host cell. इसका मतलब ये है कि ये vector पहले से ही recombinant बन गया है. Yeah. It was, we changed it into a recombinant plasmid. Now what do we want to do? We to put this into another bacterium, which is the host cell bacterium. मुझे किसी तरह से इस plasmid को इसके अंदर डालना है, right? Because okay, now you tell me, why do I want to put this plasmid into a bacterium? What's my objective of doing that? Why do you want to put this plasmid in a bacterium? So it can like move around? Okay, go back. Why in the first place, why did you make this recombinant plasmid? What is this red colored gene denoting? Wait, that it's been pulled out, no? And what copy आई है अंदर? वो तो है, ठीक है. ये रेड कलर जीन फॉर एग्जांपल इंसुलिन बनाने के लिए आपने डाली है ना, तो अब आपने बना तो ली, then how are you going to make sure that this new gene which you have inserted into the plasmid will now make insulin? आपने इसको व्हीकल में डाल दिया, ठीक है. अब इंसुलिन बनाया अभी तक कहाँ बनाया इंसुलिन? Where is the insulin? So for that reason, you need to put this recombinant plasmid into a host cell bacterium. Host cell means that this bacterium is going to harbor this, recombinant DNA, recombinant plasmid. इसको harbor करेगा, हम इसके अंदर डाल देंगे किसी तरीके से, and then once this bacterium, ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, once this bacterium has successfully taken up this recombinant plasmid, then we will grow this bacterium in the fermenter. याद है मैंने बोला था हम fermenter में डाल के इसको grow, right? इसीलिए, right? So your answer should have been that we are introducing this recombinant plasmid into the host cell bacterium because we want to grow the bacterium in the fermenter. Now when the bacteria grows, its bacterial DNA or loop of DNA will replicate, and so will the plasmid. The plasmid will also replicate. ठीक है? अच्छा. Every DNA is coding for certain characteristics. This recombinant plasmid is also coding for certain characteristics. So what will happen? जब हम इसको grow करेंगे तो क्या ये bacterium insulin बनाएगा? Yeah, then तो करेगा. बिल्कुल बनाएगा, right? So then what will we do? हाँ, एक तो ये हो गया अब हमारा third stage, ठीक है? Fourth stage में what are we going to do? We are going to select those cells का मतलब those bacterial cells which have taken up the foreign DNA. Always remember, Abdullah, that it is not 100% thing कि all bacteria और all bacterial colonies जितने भी उसमें बैक्टीरिया हैं वो सब के सब इस recombinant DNA को अपने अंदर डाल देंगे. The success rate. मैं हमने ये किया कि we've obtained a copy of a gene. We've जो हमारा vector था, we've extracted a piece of DNA from the vector and added our new DNA, our recombinant DNA. So now we're calling it a recombinant plasmid or what?
Repeat what you said. Repeat. So miss, हमने एसिल पहले हमने ये किया, we obtained a copy of the gene ना from the DNA. सही है. तो हमने पहले हमने वो extract कर दिया by the क्या कहते हैं, the three methods that we had. Then उसके बाद what we're हाँ doing सही is है. we're जो हमारा plasmid है, हम plasmid को cut कर रहे हैं with our endonuclear सही enzyme, सही. and then we are adding our whatever, like our insulin, or like whatever what would I call this? I'll call this our insulin producing No, gene. you will call it the novel gene. Novel. Novel means new gene. Acha, say. Something So I'm new. adding. Okay, now I've added my novel gene. I'm using my DNA ligaments to seal the sugar phosphate backbone, to seal it up, and which forms are and this forms recombinant DNA because हमने phosphate group सही. add कर दिया. अब हम इस plasmid को we are adding it into a bacterium so that सही. now it can progress and grow so that the cell will start producing. ये आगे क्या है? आगे ये है कि once you insert the recombinant plasmid into the bacterial cell, just like any other normal cell, if any cell has got its DNA, तो whatever it is coding or whatever the code is inside the DNA, तो वो characteristics वो produce करेगा ना, है ना? ये this is bacterial, this is the loop of DNA of the bacterium. ठीक है, बैक्टीरिया का अपना loop of DNA के पास ये एक्स्ट्रा प्लाज्मिड भी है. तो जो भी इसके अंदर जीन्स होंगी, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल लूप ऑफ डीएनए के अंदर जीन्स हैं टू मेक अमाइलेज, लेट्स से, तो वो अमाइलेज बनाएगा. अब इसके अंदर प्लाज्मिड के अंदर भी जो भी जीन्स हैं, तो ये नॉवेल जीन क्या इंस्ट्रक्शंस कैरी कर रही है, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग दैट वी नो that it carries the instructions to make insulin. So when the bacteria will multiply, when it will grow in the fermenter, it is going to produce insulin. बिल्कुल बनाएगा, क्योंकि आपने इसके अंदर इंसुलिन की जीन डाल दी हुई है. ठीक है, सही है. अच्छा, ले even before, long before we put this bacterium, ये वाला bacterium, हम long before we put it into the fermenter, उससे भी पहले we have to make sure. क्या make sure करना है? हमें ये make sure करना है कि ये जो हमारे पास इतने सारे बैक्टीरियम थे ना, इमेजिन करो ये आपके पास कोई हजारों millions of bacteria हैं, उसमें से how have successfully taken up the plasmid. Because the success rate, अगर आपको याद हो, मैंने पिछली बार भी बताया था, success rate is less than 1%. तो अगर ये सारी कॉलोनीज है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर 100 बैक्टीरिया, तो 100 में से सिर्फ एक बैक्टीरिया जो है ना, वो अपने अंदर प्लाज्मिड ले लेगा. अब आपके पास क्या टास्क आ रहा है? आपके पास टास्क ये है, विच इज द फोर्थ टास्क, ये लिखा हुआ है कि यू हैव टू सेलेक्ट दोज बैक्टीरियल सेल्स which have taken up the foreign DNA. ठीक है, आपको इस बैक्टीरिया को हटाना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है. देखो, ये आप सारे बैक्टीरिया अगर फर्मेंटर में ग्रो करोगे, फर्मेंटर को क्या क्लॉग करना है आपको? समझ आ रही है बात? You are going to clog the fermenter. It's going to incur heavy costs if you are doing it on a large scale in a pharmaceutical company. तो you have to make sure कि आपने खास ये वाले बैक्टीरिया उठा लिए, and you get rid of all these bacterial colonies so that you only have this को उठा के आपको फर्मेंटर में डाल और फिर इसको ग्रो करना है. ये इंसुलिन बनाएगा. इंसुलिन आपको क्रिस्टल separate करना है. So in today's class what will you study with me? And this is the most confusing part. आपको अभी लग रहा होगा कि अभी आपने बहुत सारे confusing parts कर लिए हैं, but the most confusing and the tricky steps to understand in the genetic engineering of bacteria is stage 3 and stage 4, especially stage 4. Okay. ठीक है, तो आज वो सही है. इसका ओवरव्यू देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ओवरव्यू नहीं दोगे ना, तो आपको लगेगा कि वेव अभी हम कर क्या रहे थे. Yeah, it's good. हम Like we भूल just like have a quick recap now and make sense. Exactly. अच्छा, and now let's do this. ये सब कुछ मैंने कर दिया है. ठीक है, ये तो this is all revision, blunt ends, sticky ends. अच्छा, तो अब स्टेज 3 में जाके क्लोनिंग होगी inside the bacterial cell. हाँ, बिल्कुल. And okay. Which will allow the vector to multiply. Plasma vector is used. अच्छा, this question is very frequently asked कि why are plasmids considered to be ideal vectors?
ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन बना लेती हूँ. इट्स लाइक एन ए लेवल क्वेश्चन, 3 to 4 मार्क इन द स्ट्रक्चर्ड पेपर. कि एक्सप्लेन व्हाट मेक्स प्लाज्मिड एन आइडियल वेक्टर. ठीक है, so the reasons are as follows, and I would like you to go through these reasons yourself so that you understand. They are found in bacteria that are easily to isolate. The ones are small, so easily to they replicate semi-conservatively, so they replicate can be removed from one space. Cut specific sides. You can say. Let's keep it. Can you scroll down a little? Miss, can you like move your screen a little bit? ये कुछ side से black हो गया. अभी सही है? हाँ. Miss, उसके नीचे और कुछ नहीं है ना? Can be cut. कुछ भी? No, that's the last bullet point. Can at Right. specific site, the restriction site. So now you understand why what makes plasmids an ideal vehicle, Yeah. right? अच्छा, always remember that plasmid जब हम कहते हैं ना, तो just consider plasmid as any normal DNA. So since we know from our AS knowledge that it's a characteristic of DNA that all DNA replicates semi-conservatively. So just like chromosomal DNA, human chromosomal DNA, या फिर plasmid DNA हो या bacterial का अपना loop of DNA हो, all these DNAs replicate semi-conservatively. ठीक है? So we can actually, अच्छा, and they're very easy to handle also. They replicate independently of the bacterial DNA. वो अपना अलग से replicate करेंगे, and जब वो replicate करेगा plasmid का DNA, तो वो वही बनाएगा जो उसके अंदर genes हैं, right? So that makes it. And another thing, of course, plasmids can be cut at specific sites by restriction enzyme. Just like we can cut the DNA, ह्यूमन डीएनए को भी हम कट कर सकते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो हम प्लाज्मिड को भी कट कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा. अब हम आते हैं, हमने स्टेज 2 पुटिंग जीन्स इन द वेक्टर. अच्छा, बताया. हाँ, स्टेज 2 में मैंने एक चीज नहीं बताई थी, वो ये नहीं बताया था कि जस्ट अ मिनट. जब हम ये कर रहे थे ना कि आपके पास एक स्टेज 2 का थोड़ा सा मैं रिवाइज करी हूँ कि यू हैव एन इंटैक्ट प्लाज्मिड लाइक दिस, राइट? And what you do is cut it and then you put the novel gene like this. तो ये प्लाज्मिड भी तो हमने किसी बैक्टीरियम से ही निकाला होगा ना. ये तो हमने, ये यू आस्क दिस क्वेश्चन कि मिस ये प्लाज्मिड कहाँ से आया. समझ आ रही है? क्योंकि देखो, हम जब रिकॉम्बिनेंट बना लेंगे तो भी हमको इसको किसी बैक्टीरियम में डालना है. That bacterium is the host cell bacterium. But before this, we had also obtained this plasmid from another bacterium. तो इसका मतलब ये हुआ कि we are using bacteria 2 times. First time, we are using it to obtain the plasmid. ठीक है? And second, we are using it to introduce the plasmid. And now the plasmid is no longer the plasmid, but it's the recombinant plasmid. ठीक है? समझ आ रही है बात? ये स्टूडेंट्स को ये बात भी जरा मुश्किल लगती है याद रखना कि बेसिकली बैक्टीरिया का फर्स्ट वो है कि हम उससे प्लाज्मिड ऑब्टेन कर रहे हैं. और वो जो बैक्टीरियम है ना, when we pull out the plasmid from that bacterium is gone. Why? I'll just wait for the azan to finish and you just read this and then I will have a discussion. ठीक है? ये
you have obtained the novel gene. Okay, this is your novel gene, and you want to put it into a vector. But the vector is not freely available. Vector, which is the plasmid, is found as a part of a bacterium. ये रहा ये vector. ठीक है? So for this, you have to gain entry into the bacterium and you have to break it open. How to do that? What will you do? Let's say कि ये आपका है, this is a test tube and you have bacteria over here. You will spin this test tube in a centrifuge. I hope you know what a centrifuge machine is, right? And at a certain speed, and then you will allow the sediment to settle down. And the sediment means कि sediment का मतलब हुआ all heavy things which have a heavier mass or heavier weight will settle down. So if I want to calculate if I want to see the difference between the mass of the bacteria का अपना DNA and the plasmid DNA, so the bacterial DNA is more heavy. ठीक है? तो where will it go? It will settle down. तो इसका मतलब बैक्टीरियल डीएनए ये वाला जो है ना, ये वाला, इट्स हैवी, तो इट विल सेटल डाउन. ये बन जाएगा आपका सेडिमेंट. हाँ, और ऊपर क्या रहेगा हमारे ऊपर? वो रह जाएंगे प्लाज्मिड रह जाएगा. अच्छा. जो supernatant is always light in weight, so you have plasmid. So what you can do is that you can easily decant it. I hope you know the meaning of decanting. You know the meaning of decanting? Decant means कि जैसे for example अगर आप एक test tube में sand and water मिलाओ, तो अगर आपको पानी separate करना हो, तो what are you going to do? You will, lower, you will lower the test tube in such a manner कि ऊपर से पानी decant हो जाए, नीचे sand रह जाए, isn't it? Yeah, no, Decanting का मतलब centrifuging. ये मुझे समझ आ गया. हाँ, समझ आ गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि if we want a vector, of course we have to obtain the vector by using a bacterium. So this is that bacterium which we use for the first time, and all write it over the host cell. Okay, this bacterium is not the host cell. Why? Host का मतलब वो किसी को host बनाता है ना. Host cell वाला bacterium कौन सा है बताओ? अभी पीछे बताया था मैंने. कौन सा? होस्ट सेल वाला बैक्टीरिया कौन सा है? हाँ, अभी जो पीछे जिसकी डिस्कशन हो रही थी, जो स्टेज 3 में हम यूज कर रहे हैं. देखो ये बैक्टीरियम तो हम प्लाज्मिड निकालने के लिए यूज करें. निकाल लिया मैंने प्लाज्मिड, ठीक है. हाँ, इकोलाई है, ऑफ कोर्स इकोलाई है, बट host will say that the host cell bacterium is that bacterium into which we introduced the recombinant plasmid. यानी हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये वाला प्लाज्मिड निकाल रहे हैं. हमने निकाल लिया, सब कुछ ये करके सेंट्रीफ्यूज करके आ गया बाहर, ये आ गया. Now what do? We cut this with the restriction enzyme. We introduce this novel gene over here. अब ये तैयार हो गया, ठीक है. Now it's ready. अब जब ये ready हो जाएगा, we need another bacterium. So this another bacterium is the host cell bacterium. ठीक है. This is the host cell bacterium. Host का मतलब ये host कर रहा है. किसको host कर रहा है? It's hosting or it's acting like a host for the recombinant plasmid. Yeah. So you should be very clear about which bacterium is the host one and which bacterium is the one from which you are obtaining this plasmid. ठीक है. वो जो हम हमने जिस क्योंकि दो होंगे ना. पहले तो एक होगा जिससे हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, जिससे हम प्लाज्मिड एक्सट्रैक्ट करेंगे, एंड दूसरा होगा वो द होस्ट वन, राइट, जहाँ पे हम फिर जाके उसमें वापस after we make a recombinant plasmid, then that's the place we'll introduce our recombinant plasmid, right? The host bacterium. Right. ठीक है. So is that clear? Right. Clear. Makes sense. Okay. ठीक है. अब हम आते हैं stage 3 पे. As I told you, now we have to actually do stage 3 and stage 4. Sorry for this overwriting. So stage 3 is that you want to put the recombinant plasmid into the host cell bacterium. That is stage 3. ठीक है. Putting the recombinant plasmid into the host cell bacterium. तो हम क्या करेंगे?
अब जाहिर है हमें बैक्टीरियम लेना है और बैक्टीरियम की सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल को ब्रेक करना है, तो इसमें हम शुरू में भी हम इकोलाई लेते हैं, इसमें भी हम इकोलाई ले रहे हैं. एंड व्हाट डू वी डू? लेट्स ओनली रीड दिस पार्ट. द बैक्टीरियम यूज्ड इज इकोलाई. A great deal is known about its genome. Genome means उसका जो genetic makeup है, and it also multiplies with a doubling time of 30 minutes. So sometimes they ask you, okay, which is the most commonly used bacterium in gene tech? So it's E. coli, because E. coli has a very, very simple genome, which means a combination of genes, and it also multiplies very fast with a doubling time of 30 minutes. यानी कि 30 minutes के अंदर अंदर अगर वो 100 होंगे बैक्टीरिया तो वो 200 हो जाएंगे, and it will go on, right? अच्छा, अब हम Yeah. क्या करेंगे, कैसे, how do we do it? This is how we do it. And again, I will ask you to read this, and then I will explain you if you haven't understood. Sorry, ये थोड़ा सा ना नजर नहीं. So I'm summarizing. Stage 3 is a very important stage in which the recombinant plasmid that you have made needs to be put inside a bacterium. For that, we have to open the bacterium. Okay, so what we do is we add the plasmid vector to a culture flask, right? A flask containing E. coli. Into that flask, we put calcium ions also in the form of calcium chloride. ये आपको याद होना चाहिए. Followed by a brief heat shock. Heat shock से क्या होगा? Heat shock से भी और calcium ions से, दोनों से, it makes holes in the cell surface membrane of the E. coli, making them permeable to the plasmid DNA. इस वक्त जो DNA जिसकी बात हो रही है वो plasmid DNA ही है. I'll just write down, sorry, plasmid DNA, right? And then finally, this process of adding the new DNA into the bacterium is known as transformation. So we have completely transformed the host cell bacterium. In fact, इस वक्त हम इसको क्या कह सकते हैं, that we have genetically modified the bacterium. हमने एक GMO bacterium बना लिया है, ठीक है? Transformed bacterium or a genetically modified bacterium. So I'm now ending my class and restarting once again. Okay.